Hello friends, welcome to Ecoholics YouTube channel. My name is Avinash Agarwal, and in this video I'll be discussing with you a very important topic. I have written it as an essay topic. I have taken it exactly the way it was presented to me because I feel that this is the most appropriate presentation. The topic is it's swallowed billions of dollars but has AI lived up to the hype? मेरा ऐसा मानना है, this is my anticipation that ये जो topic है, it can come as a standalone essay topic in any of the examinations that you may be appearing for, whether it is UPSC Civil Services exam or let us say your any other examination, whether it is RBI examination or any other examination. This question can also appear as a general studies question. It can appear as a long answer question. It can appear in optional. It can appear anywhere, right? Why? Because this is that important. ये बहुत important topic है, बहुत important discussion है regarding whether AI has lived up to the hype, whether it is boom or bust, or whether it is just faff, whether it is just gas, right? So we need to talk about this. अब ये topic मुश्किल है. Why is it that this topic is difficult? Why is it that most students will not attempt this particular topic? इसका main reason ये है दोस्तों कि ये current affairs के साथ loaded topic है. आप इसके बारे में बात ही नहीं कर सकते हो अगर आपको करंट अफेयर्स नहीं मालूम है तो. एंड करंट अफेयर्स भी नॉट जनरल करंट अफेयर्स बट वेरी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि क्या हुआ है इन द लास्ट 2 to 3 years जो कि प्रूव कर सकता है कि हैज एआई लिव्ड अप टू इट्स हाइप और नॉट, व्हाट इज द फ्यूचर, हु इज सेइंग व्हाट, हु इज इन्वेस्टिंग व्हाट, व्हिच कंपनी इज डूइंग व्हाट, which country is doing what are the case studies, what are the examples, right? So without a very heavy dose of current affairs इस टॉपिक को जस्टिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. तो स्टूडेंट्स टिपिकली क्या करेंगे कि इस टॉपिक को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, राइट? सो अनलेस एंड अनटिल आपने इसकी स्पेसिफिक तैयारी करी है, आप इस टॉपिक को नहीं लिखोगे, आप इस टॉपिक को नहीं अटेम्प्ट करोगे. एंड दैट इज वेयर द एडवांटेज लाइज कि जो टॉपिक सब लोग लिख रहे हैं, जो टॉपिक इजी है, जो टॉपिक पूरी जनता लिखने वाली, अगर आप भी उसी प्रकार का टॉपिक सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर कोई एक एवरेज से ऐसे लिखकर आ जाते हैं तो आपको कुछ अचीव नहीं होने वाला है. बट अगर आपने एक मुश्किल टॉपिक सिलेक्ट करा और उसमें आपने एक अच्छा ऐसे लिख दिया, राइट, तो देन देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट द एग्जामिनर विल रियली अप्रिशिएट व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल. मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिस्कशन इज टू treat this article which was published in the last week of July. Treat this article as a fodder material. Almost 2300 words का ये fodder material है. इसमें artificial intelligence से related examples, case studies, challenges, hopes, investments, numbers, reports, surveys, सारी चीजें mention करी गई हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगा. My request to you is that after the end of this lecture, sit with this fodder material, knowledge, understanding, notes, memory, etc. and try to write an essay on your own in 1100 words, 1000 words, right? एंड एग्जाम के अंदर जैसे ये टॉपिक अगर आपके सामने आएगा जो कि 100% आपके सामने आएगा इन वन फॉर्म और द अदर, तो आपका काम बहुत आसानी से डन हो जाएगा, राइट? बहुत आसानी से आपका काम डन हो जाएगा. हाँ, अगर ऐसे का एंगल को चेंज कर दिया, लेट अस से कि हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्व सोसाइटीज प्रॉब्लम्स, तो फिर ये टॉपिक आपको जो है फिर वापस से उस एंगल से देखना पड़ेगा ऑब्वियसली. बट अगर इस प्रकार का टॉपिक आया, AI boom or bust, something like that, then this particular article is more than sufficient to take you a very long distance. ठीक है? So 24 जुलाई का स्टोरी यूज करा जा रहा है, राइट? सो मैग्निफिसेंट 7 करके एक सेट ऑफ स्टॉक्स है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर. एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अल्फाबेट, अमेजॉन, मेटा, टेस्ला, ये सारे स्टॉक्स के अंदर जो है आपको गिरावट देखने को मिली. यू सॉ that these stocks wiped out nearly $1 trillion in investor wealth because of their decline on the Nasdaq stock exchange, right? So why is it that this sell-off happened, right? So there are concerns that heavy investments have been made in AI and those investments will take a lot of time to pay off if they pay off, right? So we do not have clarity. We do not have clarity, right? That where are we headed in terms of receiving the necessary payouts, right? So जो market watchers हैं, right,
उनको डर है कि अर्निंग्स के अंदर जो बूस्ट आना चाहिए था बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्शन, न्यू बिजनेस वर्टिकल स्टार्टिंग, राइट, ये नहीं होने वाला है, राइट. Unimpressive earnings are coming, so you don't need to use this exactly as your starting point. ये सिर्फ आर्टिकल में डिस्कस कर रहा हूँ. यू हैव टू डिसाइड कि आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो उसके ऊपर मैं आपको लास्ट में बताकर जाऊंगा. बट लेट्स जस्ट रीड द आर्टिकल एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, राइट. सो नंबर्स आर नॉट लुकिंग गुड, राइट, नंबर्स आर नॉट लुकिंग गुड. एआई के बारे में जो है सबसे ज्यादा बातचीत, एंड दिस इज अ वेरी गुड पैराग्राफ दैट यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ यूजिंग, राइट. एआई के बारे में सबसे ज्यादा बातचीत कब होनी स्टार्ट हुई ओपनली? व्हेन ओपन एआई लॉन्च्ड चैट जीपीटी. So this chat GPT, this made AI technology accessible to the masses. You and I on a daily basis can interact with artificial intelligence and see what it brings to the table. और तब से जो है काफी एक्साइटमेंट है, राइट, कि इंटेलिजेंट machines will start taking over mundane tasks such as call centers, such as summarizing reports, such as writing mails, such as writing marketing collaterals. So these are mundane tasks. So intelligent machines, right, they can either assist humans or they can completely take over these mundane tasks, right. So this is where we are coming from, ठीक है. So जो टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट्स हैं, राइट, सो उनका प्रिडिक्शन, कंपनीज का प्रिडिक्शन, इन्वेस्टर्स का प्रिडिक्शन was around cost and productivity, that this kind of a technology, this will help in reducing the cost, right, and this would help in improving the productivity. You can get the job done cheaper and you can get the job done faster. Eventually you will reach AGI, that is artificial general intelligence. So you should know what is the meaning of artificial narrow intelligence. You should know what is the meaning of artificial general intelligence, right. So what is artificial narrow intelligence? कि जो आपकी मशीन है, जो आपका प्लेटफॉर्म है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट, वो एक स्पेसिफिक काम कर सकता है. लेट्स से कि उसको हमने सिखा दिया ये आइडेंटिफाई करना, राइट, कि एप्पल इज गुड और बैड, जो सेब है, फ्रूट है, वो अच्छा है या बुरा है, राइट. तो हमने लेट्स से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फोटोज ऑफ गुड एप्पल डाल दिए, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फोटो ऑफ बैड एप्पल डाल दिए, और उसको यस नो यस नो यस नो करके सिखाया कि एप्पल इज गुड और बैड. तो वो है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, कि वो सिस्टम को जो है आप एप्पल के ऊपर खड़ा कर दो या एप्पल के कन्वेयर बेल्ट के ऊपर खड़ा कर दो, राइट, और मान दो वो देखता रहेगा और स्टडी करता रहेगा कि एप्पल अच्छा है या बुरा है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. सो दैट इज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, सेंस कि वो बहुत नैरो स्पेस के अंदर कुछ काम कर सकता है, सच एज कि एप्पल अच्छा है या बुरा है. वेयरएज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को इस प्रकार की लिमिटेशन नहीं है. दिस कैन बी अप्लाइड इन अ ब्रॉडर कंटेक्स्ट. इसको आपने स्पेसिफिकली ट्रेन नहीं भी कराया अगर किसी चीज के लिए, तो ये अपना दिमाग लगा के, कोड लगा के, लॉजिक लगाकर उस चीज के अंदर सोच के, जैसे ह्यूमन सोचते हैं वैसे काम करेगा, ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ह्यूमन बीइंग आप हो और आपके पास एजीआई है, तो मैंने आपको अगर नए एनवायरनमेंट के अंदर डाल दिया, नए प्रॉब्लम के सामने खड़ा कर दिया, नए सिस्टम में डाला, तो आप पुराने लॉजिक्स, पुराने लर्निंग्स, पुराने अपने सेट्स ऑफ डूज एंड डोंट्स को ध्यान में रखते हुए उस नए सिस्टम के अंदर आप मेक सेंस करने की कोशिश करोगे. यू विल ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ द न्यू सिस्टम दैट यू आर एनकाउंटरिंग. दैट इज व्हाट जनरल इंटेलिजेंस इज, that you use your experience, knowledge, etc., bring that to the table and make sense of what is happening in your new ecosystem. So the day machines start doing that, that would be called AGI, that is artificial general intelligence, ठीक है. So the idea is that ये सारी जो अच्छी अच्छी सुनने वाली बातें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए huge sums of money have been invested, right. So this is a number that you should note down. This is a very important number. जो भी मैं highlight कर रहा हूँ, in my opinion those numbers are very important. 2023 alone के अंदर, right, generative AI के अंदर, Gen AI, right, which can create. So what is Gen AI? It will generate something. अगर आपने suppose search करा कि I want this kind of a essay, or I want this kind of an image, or I want this kind of a video, so it will generate that for you, right, on a real time basis. So $21 billion का जो है investment हुआ, right, that was $7 billion in 2022. So 7 से 21 में हम गए as per Ernst and Young, which is a consultancy, a big four consultancy, right. Microsoft, Meta, Alphabet ने $32 billion का इन्वेस्टमेंट करा है in the first quarter of 2024 alone, right.
सो ये स्टार्टअप्स का नंबर है, राइट, एंड दिस इज योर माइक्रोसॉफ्ट, मेटा एंड अल्फाबेट का नंबर, ठीक है। सो दीज आर द काइंड ऑफ नंबर्स दैट हैव टू बी देयर। आप और ज्यादा नंबर ना डालो कोई बात नहीं, बट आपको ये 2-3 नंबर तो डालने ही पड़ेंगे हाइप से रिलेटेड, राइट, दैट these numbers prove the hype, justify the hype, explain the hype, right? That is what this is bringing to the table, right? So expensive hardware हुआ, software हुआ, data centers हुए, right? We have invested in all of these, ठीक है। नाउ वी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिन्होंने इन्वेस्ट करा है या जो कस्टमर्स है, एंटरप्राइजेस हैं, दे आर वेटिंग फॉर ROI, राइट, दे आर वेटिंग फॉर इम्पैक्ट, राइट, एंड इम्पैक्ट डिपेंड्स अपॉन व्हेन यू डिप्लॉय, यू नो or when you are able to take it to the production stage, right? So the idea is that the biggest problem is about accuracy, right? आपने भी अगर चैट जीपीटी यूज करा होगा, so there is this word that gets used, it's called hallucination, right? What is hallucination? Hallucination का मतलब ये है कि आपने सपोज कर लीजिए चैट जीपीटी को कुछ पूछा, या एंड नॉट जस्ट चैट जीपीटी, आपने किसी भी जेन एआई को कुछ पूछा और उसने आपको कोई जवाब बना के दिया। What is the guarantee that answer is right? Can you 100% believe in that answer, right? So the problem is related to accuracy, one of the major problems, right? So definitely huge sums of money have been invested, adoption rate has been low, cost has been high, and the output has been not reliable. This is your problem statement, right? So the moment you have given the introduction, the moment you have started talking about the hype, right? So you prove the hype, आप दिखाओ, मतलब first what you can do is that you give the introduction, talk whatever you want to talk, then you talk about the positives, right, then you talk about the negatives, and then you try to go towards the conclusion. This is how you typically structure an essay such as this, कि जो boom और bust की बात कर रहा है, right, reality versus imagination की बात कर रहा है. So you introduce the topic, tell all the positive things which prove the hype, which prove the glitz and glamour, then show the negative side of it, problem side of it, and then try to come to the conclusion, right? So when you do that, so problem statement के अंदर आपको ये प्रकार की चीजों को डालना है, right? And like I mentioned above कि hype के अंदर आपको ये प्रकार की चीजों को these points have to go into your hype, right? So that is the idea over here, ठीक है। again this is problem that very limited beneficiaries are there, right? अब जैसे for example AI chip maker Nvidia, right? So Nvidia के chips are very very important in any artificial intelligence machine, right? So उनका जो market value है that is jumped by over 2 trillion in under 2 years, right? Because सब लोगों को लगा कि ये chips जो artificial intelligence की backbone है एक प्रकार से, तो जो चिप मेकर है Nvidia है, that is very very standing on the cusp of a lucrative revolution, and therefore people are pumping crazy amount of money into Nvidia, right? So investors have been putting in money, but there is also a lack of patience that is there, okay? Now the problem is related to inflated inflation, right? Inflated expectations, right? Now this is a report Goldman Sachs की, right? इस report का title है Gen AI, too much spend, too little benefit, right? और ये बोल रहे हैं that the productivity impact, the economic returns, they are overestimated, right? So Jim Covello, who is the head of global equity research, is asking this question: what 1 trillion problem will AI solve, right? Now the point is, ठीक है, कि इस पे $1 trillion का एक्सपेंडिचर होने वाला है, राइट? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने वाला है, बट वी आर नॉट श्योर व्हाट वी आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट, राइट? एंड अगर हमारे एक्सपेक्टेशंस मटेरियलाइज नहीं हुए तो जो इन्वेस्टर एंथुजियाज्म है वो खत्म हो जाएगा, इन्वेस्टर्स विल मूव ऑन, राइट? एंड वी कैन ऑलरेडी सी दैट हैपनिंग बिकॉज जो फंडिंग है वो ऑलरेडी कम होने लग गई है, राइट? सो पूरे AI स्टार्टअप्स के अंदर डेफिनेटली 2023 के अंदर लाइक वी सॉ huge amount of money was spent. Same EY is saying that in the first quarter of 2024, AMJ, that is April, May, June, we have seen only $3 billion of investments happen globally in AI startups, right? So the idea over here is that we are already seeing a declining or a waning enthusiasm, ठीक है? Now the point over here is that what happened, ठीक है? So if you ask Archana Jagirdar, right, of Rakam Capital, so she says that we were too quick, right? हमने जो Gen AI है
उसको बहुत जल्दी विक्टोर डिक्लेयर कर दिया। अब जैसे कई लोगों ने बोला कि टीचर्स की जरूरत नहीं है, अकाउंटेंट्स की जरूरत नहीं है, लॉयर्स की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, सब सिखा दिया जाएगा। डिडंट हैपन, राइट, इट डिडंट हैपन। ठीक है, मोनेटाइजेबल यूज केस होना चाहिए, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यूज केस है, डेफिनेटली यू कैन कीप प्लेइंग विद इट डे आफ्टर डे, राइट। मोनेटाइजेबल यूज केस होना चाहिए, यानी कि somebody who is, let us say, operating an enterprise or a firm or something like that, should pay money out of their pocket to use these kinds of systems, right? So the idea over here is that it will be time taking. If you ask, let us say, Daron, who is, let us say, a professor at MIT, right? So it will automate tasks, but that will take time, it will take 10 years, right? Gartner, which is a very respected technology research and consulting firm, right? So the point over here is that they have this concept of new technology hype cycle. This is very very beautiful. अगर आपने इसको incorporate करा अपने ऐसे के अंदर, some part के अंदर, it will be very good. I'll tell you the reason why, right? So these names, right? Like for example, this name over here, okay? Sorry, I'm taking you back, but this name, Goldman Sachs, and they publish this report. This name is very important because examiners will know this name. When you take these names and based on these names give your inputs, then your inputs will be valued a lot. Okay, with no disrespect, but this is also a little unknown name, तो हमें नहीं मालूम पड़ेगा, right? तो हमें नहीं मालूम पड़ेगा, will not be able to add value. But this is again a very very known name, right? Research and consulting firm Gartner. So they have this technology hype cycle कि जब भी कोई revolutionary या नई टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत hype create होता है, right? So Gen AI, it has passed the peak of inflated expectations, right? And it is entering the trough of disillusionment. Any examiner that you will be coming across, उनको गार्टनर की हाइप साइकिल जरूर मालूम होगी, तो आपको ये चीज जरूर मालूम होनी चाहिए. एंड इफ लेट्स से दैट एग्जामिनर इज रीडिंग 10 आर्टिकल्स और 10 essays, एंड आपके ऐसे के अंदर he or she reads about Gartner's technology hype cycle, in which you say that Gen AI has passed the peak of inflated expectation and is entering the trough of disillusionment, right? So that will be making a lot of sense. Problem is poor return on investment, ROI बराबर नहीं है, right? So yes, it can summarize, synthesize and create content, right? But and yes, it can compete with Google search, right? But the idea over here is that नहीं मजा आ रहा है, ठीक है? Internet definitely impacted every part of our work, business, economy, society, right? सब कुछ हो गया, ठीक है? ऑनलाइन रिटेल सब कुछ हो गया, ठीक है? Internet led to global IT services का boom, right? You could outsource a lot of work because of internet, right? So एक $250 billion की इंडस्ट्री खड़ी हो गई इंडिया के अंदर, 5 मिलियन लोग उसके अंदर एम्प्लॉय हो गए, राइट? कॉस्ट इफेक्टिव बना दिया, ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट कर दिए. So this was the impact of internet, right? And it took time, but it was definitely something. ये एक ऐसा रेवोल्यूशन था, ऐसा चेंज था which can never be rolled back. आज इंटरनेट के बिना काम करना, समझना है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, सोचा भी नहीं जा सकता है, राइट? बट एआई क्या करेगा, राइट? एज ऑफ नाउ ज्यादा से ज्यादा जो लो वेज जॉब्स है, राइट, उसको एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी के साथ जो है चेंज करने की कोशिश करेगा. दैट इज व्हाट एआई कैन डू राइट नाउ. फॉरगेट अबाउट द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट इंटरनेट हैड. व्हाट एआई कैन डू राइट नाउ इज दैट, जैसे मैंने आपको बोला, इज एप्पल गुड और इज एप्पल बैड? तो जो सॉर्टर होता है, सॉर्टर है ना, जो अच्छे से बुरे का फर्क समझता है, वो एक लो वेज जॉब होता है. उसको हम चेंज करेंगे, उसकी जगह पर हम एक बहुत ही एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी लगा देंगे और हमें मालूम भी नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी हर बार सही काम करेगी या नहीं करेगी. तो अगर उस टेक्नोलॉजी के अंदर कोई बग चला गया, कोई प्रॉब्लम चला गया, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, राइट? सो दैट्स द बेसिक आइडिया दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है? मूविंग पास्ट सम बेसिक कंटेंट ओवर हियर, you should read this. Another very important part of good essays is that अच्छे essays के अंदर जो है एक अच्छा डोज ऑफ रेलेवेंट हिस्ट्री दिया जा सकता है, या एक अच्छा डोज ऑफ रेलेवेंट एनेक्डोट डाला जा सकता है. दैट इज अ हॉलमार्क ऑफ अ गुड एसे, राइट? सो फॉर एग्जांपल ओवर हियर, यहाँ पर एक बात करी गई है कि 1905 स्पेनिश अमेरिकन फिलोसोफर जॉर्ज सैंटायाना, व्हाट डिड ही से, राइट? those who cannot remember the past are condemned to repeat it. अगर आपको इतिहास याद नहीं है तो आप उस इतिहास को
दोहराओगे ही दोहराओगे, राइट। तो जो टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट्स हैं, जिसको गीक्स कहा गया है इस आर्टिकल के अंदर, दे कीप वेटिंग फॉर दिस नेक्स्ट बिग टेक आइडिया, दे कीप वेटिंग दैट हाँ ये एक आइडिया आएगा जो कि बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी होगा। इन्वेस्टर्स भी वेट करते हैं, गीक्स भी वेट करते हैं, एंड देन व्हेन सिमिलर वन सम सच आइडिया कम्स, वी इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी इनटू दिस आइडिया, राइट, which may be ahead of its time, which may be completely wrong, right? अब जैसे billions of dollars were poured into solving the Y2K problem, right? And the dot-com bubble, it started taking shape. So please read about the Y2K problem. Please read about the dot-com bubble, right? So ये internet-based company started got it creating in 1990s, right? And एक बहुत बड़ा dot-com bubble create हुआ था कि these companies are going to change the way we work, etc., etc., right? So the Nasdaq has it went from 1,000 to 5,000 between 1995 and 2000, right? So चाहे ऑटो पार्ट सेलर हो, बेकरी हो, राइट, सो सबको ये आइडिया बेच दिया गया था, राइट, कि अगर आप ऑनलाइन नहीं हो तो आपका धंधा खत्म हो जाएगा, अगर आप ऑनलाइन नहीं हो तो आपका धंधा खत्म हो जाएगा, राइट। एंड ऑफ 2001 तक रियलिटी सामने आ गई, राइट। कंपनी जो ऑनलाइन थे उनके पास कोई यूजर्स नहीं था, और जो ऑफलाइन था वो अपना काम कर रहा था, राइट। तो जो नैस्डैक कॉम्पोजिट स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, राइट, जो 800% इंक्रीज हो चुका था, इट क्रैश्ड फ्रॉम इट्स पीक बाय अक्टूबर 2002, all the gains were lost, all the gains were lost, right? So this is one of the most famous example of boom to bust, right? There was a huge boom, huge euphoria, huge enthusiasm, right? People were going crazy about it, and ultimately it was all lost. Ultimately it was completely lost, right? There are more examples, right? Metaverse, right? From a technology standpoint, NFT, non-fungible tokens, these were ideas. When these ideas were inaugurated, these ideas were celebrated like crazy. These ideas are dead, right? So metaverse, right, that people will go to the 3D virtual web via their avatars, right? So this avatar was market was projected to be over $1 trillion market, right? NFT, non-fungible tokens, they started selling, right? Crazy valuations, crazy. I'm not going to go into what metaverse is or what NFT is. I expect you to do that. But these are all very, tech domain ke ideas that went mainstream like crazy, right? Eventually, both these ideas are dead. Nobody is really talking about NFTs and metaverse anymore, right? Definitely early days, right? So this is a more fundamental technology shift, right? In the early days you'll have to wait, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हाइप के अंदर, पॉजिटिव के अंदर आप ये बोल सकते हैं कि जो ओपन एआई है उसका चैट जीपीटी है 180 मिलियन DAU. व्हाट इज DAU? इट इज डेली एक्टिव यूजर्स, राइट, but less than 5% pay for it, and this is where the problem lies. Monetization, people will tinker around with it, people will use it. I will use some gen AI to create some stupid images that I would want to put a part of PPT or something like that, I don't know, right? But the idea over here is that use it. So this is in digital startups, they are playing with this, okay? So the point of contention over here is that when do you start earning from it? Because see, infrastructure build out सब लोग कर रहे हैं, मिडलवेयर, सर्विस लेयर, एप्लीकेशन लेयर, राइट, ये सारी चीजें आपको बिल्ड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद मोनेटाइजेशन आएगा, एंड इट इज नॉट वेरी चीप टू बिल्ड एट ऑल, राइट। बहुत सारा फोमो है। व्हाट इज फोमो? फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट, कि अगर आपके पास एआई स्ट्रेटेजी नहीं है तो आपके पास स्ट्रेटेजी ही नहीं है, ठीक है। पॉइंट इज दैट कि आपको ये बेचा गया है दैट इफ यू इग्नोर एआई यू विल बी आउट ऑफ बिजनेस। सो उबर, नेटफ्लिक्स, Amazon, Airbnb, they disrupted the market, right? They have to adapt to AI, otherwise there will be a torpedo attack, right? What is torpedo attack? So let's say that your boat is sailing over here in this direction and suddenly नीचे से एक torpedo attack आता है जो कि आपको जो है completely bamboozle कर देता है, right? You never anticipated it. So companies को ये torpedo attack से बहुत डर लगता है. Companies don't want this kind of a torpedo attack. They want to be ready, they want to be prepared, and that's what they are doing. You will have to in your essays give Indian examples, right? So in this particular discussion, okay, you have to talk about economics. So India wants to be one of the top 3 global economies. Gen AI can play an important part in this, etc., etc., right?
right now the reality is, as per EY, only 15 to 20% of the projects जो है they have been rolled out into production, means उनका monetization start होगा या they will become a core part of business offering etc. right? जो global capability centers है, GCCs है, वहां से जो POC का रोल आउट है towards production, that is around 40%, right? यूज केसेस क्या है? यूज केसेस है कि दे आर इंटेलिजेंट असिस्टेंट्स, चैट बॉट्स बना दिया, मार्केटिंग ऑटोमेशन करवा दिया, टेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज कर लिया, राइट? इमेज जनरेशन के लिए यूज कर लिया, वीडियो जनरेशन के लिए यूज कर लिया, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस में यानी कि डॉक्यूमेंट समराइजेशन के लिए यूज कर लिया, एंटरप्राइज नॉलेज मैनेजमेंट के लिए यूज कर लिया. सो यू कैन सी दैट these are the use cases. You must point out these use cases. They are very, very important. This must be pointed out in the early part of your essay, in the introduction or in the hype part. Why is it that everybody is hyping around it, right? And you must point out that yes, these are very good examples that Tata Steel, right, has introduced or partnered with the AI tech platform ताकि green steel बना सके by reducing emission. Indigo has introduced AI chatbot 6E Sky to assist travelers. Flipkart has launched Flippy, right? To give customized recommendations. Reliance and Tata Group, they have a pact with Nvidia to develop AI powered supercomputer and Gen AI applications. Government of India has put aside 10,000 crores to procure computing power for AI projects, right? So ये चार पांच एग्जांपल्स से क्या होता है कि इससे आपकी हाइप जस्टिफाई होती है, इससे आपका एंथुजियाज्म जस्टिफाई होता है इन अ वेरी इंडियनाइज. एंड इफ यू कैन फाइंड सच बिग एग्जांपल्स, बिग नेम्स जो कि एग्जामिनर समझता है, डोंट टॉक अबाउट स्टार्टअप्स जिनको $2-5 million मिले एंड नोबडी हैज एनी आइडिया अबाउट इट, राइट? So these are very, very important examples that you have to try and give, right? So the idea will be that AI, it will be cost effective. So where will AI be helpful, right? Now in a country like India, from an economic standpoint, you must highlight, right, कि India के अंदर labor force is already cheap, right? Very cheap. And if trained appropriately, they can do their job well and accurately. So do you really see a use case of AI in that direction? एआई का यूज केस इंडिया में इट मेक्स मोर सेंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बिकॉज उसमें क्या होएगा कि कोडिंग टास्क विल बी ऑटोमेटेड, मैन पावर की रिक्वायरमेंट को हम कम कर पाएंगे, राइट? एंड वो महंगा मैन पावर है, राइट? एंड दिस कैन बी वेरी, वेरी डेंजरस ऑल्सो, बिकॉज अगर अच्छे वाले जॉब्स इफ यू स्टार्ट लूजिंग, so as it is, Indian economy is not creating a lot of jobs to start with, right? So you have to be very cautious about the same, right? So like I said, and that yes, definitely productivity can improve, but there will be errors, there will be hallucination, right? There will be data theft, right? So these are all the problems that we have to be able to address. So you see that this is a fantastic fodder material. आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव, बुलिशनेस, बेरिशनेस, एग्जांपल्स, केस स्टडीज, सब कुछ है. एक बहुत अच्छी केस स्टडी जिसको पूरी दुनिया ने जाना है वो है केस स्टडी ऑफ क्लारना, राइट? Not a lot of Indian students would know about this, right? Because हमारे मीडिया में उतना उछाला नहीं गया है as of now, but this is very beautiful case study of Klarna. So Klarna is basically a fintech company. They partnered with OpenAI that let's develop a virtual assistant, right? And this fintech is claiming that हमारा जो query resolution time है that is down from 11 minutes to 2 minutes. 700 humans का जो काम है वो assistant कर रहा है, saving $40 million in year. You can actually start with this kind of a case study which is very short, very compact, and which very clearly tells you that what is happening, right? So you can place this in your introduction if you want, and then simultaneously you can say that 2023 के अंदर जो enthusiasm देखा गया था investors के अंदर who put in nearly $21 billion into Gen AI or AI kind of projects has now come down to, let us say, half of that in 2024, likely to come down to half of that, राइट? पैसा जा कहाँ रहा है, या वेयर आर द मोस्ट ऑब्वियस यूज केसेस? वर्चुअल असिस्टेंट्स एंड चैटबॉट्स, राइट? यहाँ पर ह्यूमंस को हटा दीजिए, कॉल सेंटर्स को बंद करवा दीजिए एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स और चैटबॉट्स लगा दीजिए. सो कॉस्ट भी सेव हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो जाएगी, कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, राइट? गार्टनर का सर्वे हुआ है एज रिसेंटली एज December 2023, 5,700 कस्टमर्स के ऊपर, एंड दे आर वेरी क्लियरली सेइंग दैट पीपल आर कंसर्न. They are trying to sidestep AI so that they can speak to a human. They would switch to a competitor अगर
if they find out that their existing supplier is using AI for, let us say, customer service, right? So definitely, customers, they want to exhaust self-service options, and if their problems remain unsolved, which they find that it remains unsolved, so they would definitely like to get it clarified, verified from a human being, right? So this could be, the end of your essay over here, right? That, boss, these are the real life problems: high cost, lack of killer apps, being able to generate correct content, error free content, right? You will have to produce trustworthy results, and if you are able to do this, then definitely there is going to be a discussion around it. But otherwise, whatever a little bit, acceptance is there, it can very quickly be lost, right? So this is my entire submission, guys. I would really encourage you to write an essay on this topic, right, on the topic that I presented, right? I have provided a lot of fodder material which you can use as a part of your introduction, body, and conclusion. Try to structure your essay, give a very relevant introduction which captures the essence of the topic. Try to give a very relevant body which in a very structured manner, subtitles दे देकर, right, आप जो है systematically सारी चीजों को present कर रहे हैं. You're talking about the hype, you're giving examples of the hype, you're giving the why of the hype, you're giving the where of the future, right? Then you start talking about the bust, or you start talking about disillusionment, that why is it that people are losing patience, example of people losing patience, numbers, etc., etc., what are the experts saying? And then you finally come towards a conclusion, that conclusion being that, boss, it's too early to throw it out of the window, but it is too early to declare this idea the king, right? So this is my submission to you today. I hope that you all have enjoyed this discussion, learned something from this discussion, and I hope that you'll use this discussion in the exams going ahead. I'll meet you all on Monday again. Until then, thank you so much. All the very best, and Jai Hind to all of you. Thank you.